So let's start today. Today we will be obtaining the equations of motion for constant acceleration by the method of calculus. Okay. Okay. So we already know the three equations of motion. That is, what is the first equation of motion, students? V is equal to U plus V T equals to plus U AT. plus AT. Okay. What is second equation of motion? S is S equal is to equals to 80 plus. Square. Okay. S is equals to ut plus half at square. And what is the third one? V square minus U square is equals to 2AS. Okay. Yes. So v square minus 2 square is equals to 2as. So yesterday we derived these equations graphically. So that was quite easy. Here you had the body was, when you started observing, the body was already moving at time t is equals to 0. It was already moving with the velocity u, initial velocity, and you observe the body till the velocity reaches v. Okay, and then you drawn a perpendicular over here, and this was your angle, suppose theta. So students, you know that tan theta is equals to perpendicular upon base. So this is your perpendicular. So what is this length? This length is u, and this length was V. v. So this is v minus u, and this length is t minus 0. So that is t. So this length is t. So in this right angle triangle, you have one side as v minus u perpendicular and base as t. And students, what do we get? Tan theta here. That is your slope. We called slope as tan theta. Okay. And you know the units from here. Here the units are meter per second, and here the units are second. So meter per second upon second. What units do you get, students? Meter per second square. And these are the units of acceleration. Acceleration. So it means acceleration is equals to slope. Okay. Okay. And this is equals to, slope is your tan theta, that is v minus u upon t. So you get your first equation from here, v is equals to u plus at. So it is as simple as this. Okay. Now students, again from the same figure, if you derive the second equation, s is equals to ut plus half at square. Let us derive this equation. So same figure, this is your triangle and this is your rectangle. Now what is the, so first thing is the slope. Now second thing, what the area tells you, students. So area is the units length multiply breadth. So these two units you will be multiplying on the x-axis and on the y-axis. So multiply these two units. So meter per second into second. So what is the area of this figure tells you? Sir, distance with Meter. SI unit of meter. Yes, so that is distance, and if it is motion in a straight line and you are moving in only one direction, then distance and displacement are the same thing. Okay, so these are the units. So these are the units of distance or displacement. Okay, so when we are moving in a straight line and we are moving in one direction, then distance and displacement is the same thing. Okay, and the magnitude of velocity is the speed. So now students, if we get this area under this graph, VT graph, velocity time graph, you will get the area, right? And that area is your distance or displacement. Okay.
So we can write this area, and see, we have third formula also which involves S. So we have two formulas which involve S. So definitely in if S is involved, so again we need to find the area. V square minus U square is equals to 2S. This formula also, students, involves S. This formula also involves S. So both the formulas involve area. And we can find the area of this figure in how many ways, students? Which see, which figure is this? Trapezium. Trapezium, okay. And which figure? We have divided this trapezium as two geometrical figures. Yes, this is a Right angle triangle. okay, right angle triangle, and this one is Rectangle. rectangle. So students, now if you find the area once by taking the area of triangle and the area of rectangle, and second time you find the area of trapezium. Let us see what do we get. So S is equals to the area of triangle plus area of rectangle, right? So students, what is the side of this triangle? What is the side of this triangle? This side. V minus U. Very good. This is, we have already calculated it. This is V minus U. And students, what is this length? T. T. Yes. So area of triangle is equals to half into base into height. So S is equals to half into, what is your base? 5T. Into height is V minus U. So that is area of triangle. Now what is area of rectangle? What is this breadth? That is equals to U. U. So students, U into T. T. So solve it. What do you get? Half VT minus half UT plus UT. Okay. So what do you get from here? This half UT plus UT. So you can assume it as X. Okay. So X minus X by 2. What do you get? Plus X by 2 means plus UT. Okay. Hello. Yes, sir. Yes. Or student. Yes. Hmm. So what is this equals to? Half into U into V. You can take T common. See, we are actually approaching this formula also by this way. Let us just go back. Why don't we take the value of T common here? So what do we get? Students, can I use this formula here? I want to bring acceleration in this formula. And I want to remove V. Yes, V is not there in this formula, so I need to bring V, and I need to bring A, and I need to remove V. Okay. So you can put this formula also. So put this value of V from here to here. So what do you get? U plus T. Yes. This is the formula of V you have put. Plus U plus UT. Okay. Yes, sir. So we have put the value of V here. So what do you get, students? U say U cancel? Yes. Yes, sir. And see, here it is. Now multiply this half AT with this AT. What do you get? Half AT F80 square. plus UT. So you have got this
formula. Okay. Now, Yes. now the third formula, area is equals to area of trapezium. So what is area of trapezium, students? Half into, Sum of if parallel opposite sides. side is AB and the height is h, then half into A plus B, sum of parallel sides into height, right? Yes, sir. So what is your opposite side, students, here? This is U, and what is this side? V. V. Okay, this is V, and this height, you know, that is T, right? Yes, sir. So S is equals to half into A plus B, means U plus V into T. Okay. Now again, students, what you need to remove here? Here you need to remove what? Time. Yes, here you need to remove time. Very good. So in this formula, see, we have 5 variables. What are the 5 variables? V, U, A, S and T. You will have, in all these equations, you will have 4 variables. Okay. So like here, which variable was removed? V. So put the value of V from equation 1 in this equation. Now in this formula, so in second formula, V was not there. So you put the value of V. In third formula, T is not there. So you need to put the value of T, students, from first. V minus U upon A. Yes, good. So U plus V and T is equals to, from this equation, you can write V minus U upon A. Okay. Yes, sir. So you get Yes. V minus U upon A. So S is equals to this. So now this A and 2 will go that side. So what do you get? 2AS, and this is equals to A plus B into A minus B. A square minus B square. So remember this, A minus B, V minus U. So V square minus U square. So students, our third equation is also derived. Okay. So that's the quick revision. Some of you might be absent, or is it done, students? Yes, sir. Yes, sir. And you have also understood logically why we are putting which value, and why we are taking area, and why we are taking slope. So each and everything is logically explained to you, right? So shall we move forward? Yes, sir. Okay, students. Now same equations we will be deriving with the help of calculus. So students, let us write some formulas related with the calculus first. How do we reach this calculus? Why do we need this calculus? You know, it has differentiation and integration. Differentiation means you are finding rate of change, and integration is nothing but you are finding the sum of the area under the slope. So adding, basically. So here you are finding the rate of change, here you are summing up, you are sort of adding. Okay. Now let us start with the first formula. As we are doing motion in a straight line, okay, so very simple example we are taking, that the object is moving in this direction, okay, and so here the distance displacement is the same, and the velocity and the magnitude of velocity and the speed is also same. So what is the first formula of average velocity we did, or velocity, is equals to displacement upon, means change in position. Yes, what is velocity? Change. The rate of change in position. Okay, change in position
divided by time taken. Like here, here it was origin and it was position, suppose x1, and this position was x2. Here the time was t1 and here the time was t2. So we have written this as x2 minus x1 upon t2 minus t1. That's the change in position and the change in time. So you can further write it as change as delta. So delta x by delta t. So that's your displacement upon time taken. Okay, students? So that's what your velocity is. So this velocity is average velocity. Okay. Now next thing is I want to find the velocity at this point A. So velocity at A is instantaneous velocity. Okay, students? And for instantaneous velocity, I will remove this bar which tells you the average velocity. So how will I write this formula? Students, for this formula, as simple as this, like, let me zoom this figure. This was your T1, this was your T2, this is your X1, this is your X2, right? I want to find the instantaneous velocity at this point A, okay? Now, if you find the average velocity between this time interval, you are finding the average velocity for this time interval. Will this velocity better represent instantaneous velocity, or if you take this timings, this time and this time, if you are taking this delta t and if you are taking this delta t dash, one will give you, and this suppose position x3, this is x4. So this v I write as two option you have, x2 minus x1 upon t2 minus t1, okay? And another option you have is v equals to x4 minus x3 upon t4 minus t3. So which one of these two will tell you better instantaneous velocity? So the second one. The second X4 one. minus X3. Yes, because, okay, now I am giving you one more choice today. I am giving you one more choice. This is your very near to A, this is your x5 and x6, very near, okay? So x5 minus x6 upon, oh sorry, x6 minus x5 upon, this is t2 delta t double dash means t5 t6 minus t5. So which one gives you better representation of instantaneous velocity? The third one. So the third one. So clearly here you can see that if this time was suppose 10 seconds, this delta t dash or delta t prime, this was 1 second, and this delta t double dash is 0.001 second. So if you are reducing your time and taking this time as small as possible, better the average velocity representing your instantaneous velocity. Have you got this idea, students? Yes, sir. So if you take this time interval as small as possible, your average velocity is better represented to instantaneous velocity. Got it? Yes, sir. So let us write this formula again, this formula that you have already written for the average velocity. For the instantaneous velocity, let us write it again. So this is instantaneous velocity. So instead of this change, I want to take very, very small change. Okay. I am taking delta t tends to 0. This is the meaning of delta t as small as possible. So I can write it as in mathematical terms. How can I write it as?
delta t tends to 0. Okay, so this, when delta t tends to 0, when delta t is as small as possible, so write this t as small as possible. So student, delta x to this is change. This is very small change. So for very small change, I write d. Okay, is this clear? Yes, sir. So students, you have got a new formula for the instantaneous velocity. The only difference is here delta की जगह आप क्या लिख देंगे? Very small change in x upon very small change in y. Easy. Noted it down, students? Yes, sir. Okay. Good. So students, in very short, if you want me to conclude what I want to say, I just want to say average velocity you will be written as delta x by delta t, and average you will be written as dx by dt. Okay, so this is instantaneous. So here you know that these two quantities are very small, and here this is journal change. Okay, that's your average. So average is better representative of instantaneous. So I have changed actually average to instantaneous by taking this delta t as small as possible. Okay. Yes, sir. Okay, good. Now students, tell me, so you can write it as v is equals to s by t, average velocity. So is your distance equals to velocity into time, right? So here also students, what the formula do you get? Dx is equals to v into dt. Yes, small change in position is equals to instantaneous velocity into small change in time. This is one of the ways of understanding it. Okay, so this was your first formula. Second formula you have is acceleration. So what is acceleration is equals to average acceleration, change in velocity upon change in time. Yes. What is instantaneous acceleration equals to, students? dy by dt. dv by dt. So same way. Okay, now you know that what, so delta v can write it as average acceleration into time. Similarly here dv is equals to a into dt. Any problem, students? No, sir. No, sir. So you are comfortable with these formulas or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now students, suppose a is equals to dv, this is the third thing, a is equals to dv by dt. Okay, can I multiply it and divide it by dx? Small Yes, change sir. in position. Now can I further write it as dv by dx into this dx I am taking this side, and this t I am taking this side. Okay, so dx by dt. Is there any problem in writing this? No, sir. No, sir. Okay, now what is dx by dt? Sir, average instantaneous. Instantaneous velocity. So can I write it as that a is equals to v into dv by dx? Yes, sir. Yes, sir. So you have got third formula, students, for the acceleration. Second formula. As a whole, you have got the third formula. First formula was v is equals to dx by dt. Second formula was a is equals to dv by dt. And third formula for acceleration, you have got one more formula, students. Write down these three formulas. These are very important. First formula, second formula, and third formula. And you can further write this formula like from first and second, you have taken dt that side, here also dt that side, and if you take dx this side, what do you get?
A dx is equals to V d. Students, write down these three formulas, understanding the concept. Okay. Let me explain it again here. Acceleration was equals to dv by dt. Okay. So this was the formula of acceleration. I have rewritten this formula again here. And I have multiplied numerator and denominator by dx. Okay. And then I have interchanged the positions of dx and dt. Both are in denominator, so I have just interchanged their position. And then I have written the dx by dt is equals to v. Equation first. Okay. Excuse me, sir. Yes, beta. So these all formulas are for acceleration. See, first formula is for the velocity, second formula is for acceleration, third formula is for acceleration. Okay. This is a new formula of acceleration that you have learned. देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं अच्छे से. सी, फिजिक्स मैथ्स you have to write 3 times 4 times, 2 times 3 times. In first time you will find things new and the new language. Okay. But when you will do it again, when you will revise it again, you will find these things very easy. Again, third time, very, very easy. Okay. And students, I have started class of JEE mains and advanced for maths. The class which is at 4, we are taking the questions of JEE mains and advanced in that class. So those who want to appear for any competitive exam, and even if you want to do BSc students, if you want to do BSc from good colleges, good university like Delhi University or IISc Bangalore, which is the number one. IISc is above IITs, but IISc, Indian Institute of Science, is only for pure sciences, not engineering and medical. But those who want to be research scientists, for them number one institute of India is IISc Bangalore, Indian Institute of Science, which is number one institute of India, even above the IITs. It's ranking above IITs. And for that also you have to appear for the IIT mains and advanced exam. On that behalf you will get admission in IISc. So students, first step is get your NCERT clear, and then second step is preparing, do each and every question, each and every word of NCERT. That is the first step with complete understanding. And then the second step is preparing for the competitive exam, NEET or JEE mains and advanced. So for maths, I'm already organizing classes at 4 p.m. Those who are interested, those whose concepts of AP and GP are clear, they can join those classes. Next thing is for physics also, might be this week or next week, I want some syllabus to be covered. So that's what I'm waiting for.
So once this chapter will be over, so might be in this week or next week, I will be starting classes for physics also, for JEE mains and advanced and for NEET. So students, just start getting comfortable with me. There will be a regular teachers who will be taking your CBSE, and then I will be taking the competitive exam section. So start getting comfortable with me. Initially concepts look difficult, but you will realize after some time that these concepts are very easy. You are able to do the questions from the competitive exams. Okay, chaliye. So students, I hope you have noted it down. Shall we proceed? Yes, sir. Okay. So the three formula, let us write them again. First formula, velocity is equals to dx by dt, students. What is the second formula? Acceleration is equals to dv upon dt. dt. And what was the third formula? Again the formula V. acceleration, yes. V into du. dv by dx. And see, at any point of time, students, you can just check your formula whether my formula is correct or wrong. See, put the value of v here. What is v? Dx by dt. Put the value of v here. Dx by dt. So dx by dt into dv by dx. So see, what do you get? dv by dt, which is your acceleration. Okay. Yes, sir. याद हो गए तीनों फॉर्मूले आपको? Yes, sir. और कोई डाउट है तो आप चेक भी कर सकते हैं. थर्ड फार्मूले, दो फार्मूले तो आपको ऑलरेडी याद थे. तो स्टूडेंट्स, इन्हीं तीन फार्मूलेज की हेल्प से हम अब अपनी इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं. चलिए फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at. ओके, तो स्टूडेंट्स v ऑलरेडी आपके पास है. चलिए, तो क्या है? तो प्रूफ. तो यहीं से स्टार्ट करेंगे. v इज इक्वल्स टू dx बाय dt. तो इसी को रीराइट करेंगे स्टूडेंट्स. क्या हो जाएगा? या एक्सेलरेशन हम जो है यहां से स्टार्ट करेंगे. हमें इंटीग्रेशन यूज करना है. डिफरेंशिएशन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं स्टूडेंट्स हम. ये डिफरेंशिएशन आपके सामने, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो अब हमें यूज क्या करना है? इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो ये देखें कि यहां पर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये v, इन इक्वेशंस को आप v dt इज इक्वल्स टू dx, a dt इज इक्वल्स टू dv, एंड इस इक्वेशन से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? a dx इज इक्वल्स टू v dv. ओके, Yes, sir. बेटा वी हैव री रिटन दीज इक्वेशंस. कुछ नहीं किया, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं किया हमने. अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे अगर इसको, तो क्या मिलेगा हमें? v dt. अच्छा, हम इसको ऐसा करें, इट्स बेटर इफ वी राइट dx इज इक्वल्स टू v dt. ओके, एंड हियर आल्सो इफ वी राइट dv इज इक्वल्स टू a dt. ओके, अगर ऐसा लिख लें तो इट विल बी बेटर. बात एक ही है. RHS को LHS बना दिया, LHS को RH बना दिया, एंड v dv इज इक्वल्स टू a dx. ऐसे लिख लें. ओके, चलिए वन बाय वन तीनों में इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं.
लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। तो यहां इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें चेंज क्या हो रहा है, व्हाट इज द स्मॉल चेंज? Sir, displacement. ये पोजीशन है स्टूडेंट्स एक्स, क्या ये पोजीशन? चलिए दोबारा से देखते हैं, बहुत अच्छी बात आपने की, डिस्प्लेसमेंट आपका आंसर भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो एक्स है डेट इज पोजीशन एंड dx मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन एंड वेरी वेरी स्मॉल चेंज पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ठीक है। अगर सपोज मैं यहां x1 से सपोज x2 तक गया हूं और ये जो है मुझे ये dx क्या है, ये पूरा का पूरा तो है स्टूडेंट्स चेंज इन पोजीशन, आप इसे डेल्टा, dx क्या है, ये छोटे 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 पार्ट्स बना दो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये dx हैं, ओके। ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स क्या हैं आपके dx, सबको आप ऐड कर दोगे, कहां से कहां तक इन पार्ट्स को ऐड करोगे, x1 से x2 तक, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, यस हाँ, तो आप मान लो यहां पर आप 0 पे थे, इसको x1 को इजी मानने के लिए मान लो आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया और आप पहुंचे ओरिजिन से x तक, कहां तक पहुंचे, ओरिजिन से x तक। तो सारे dx dx ज्वाइन कर दोगे 0 से लेके x तक, तो क्या मिलेगा आपको, X. तो स्टूडेंट्स यहां कुछ फार्मूलाज नोट कर लो इंटीग्रेशन के। अगर आप सारे के सारे जो dx ज्वाइन करेंगे, सारे के सारे dx ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब एडिंग अप ऑल दीज इनफाइनाइट टर्म्स वेरी वेरी स्मॉल, कहां से कहां तक, 0 से x तक, तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, है ना भैया। आप क्या कर रहे हैं, 0 से लेके x तक सारे के सारे जो स्मॉल dx हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ऐड, ये है इसका मतलब। 0 से लेके x तक सारे dx ऐड कर दो स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, x। है कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलिए सेकंड फार्मूला मुझे बताइए कि अगर आप अब स्टार्ट हो रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, ये आपका चेंज है वेलोसिटी में। हमेशा जो ये जो लिमिट्स रखी जाती हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, आप जिसको ऐड कर रहे हैं उसी की तो लिमिट रखेंगे। अगर आप x को चेंज कर रहे हैं तो कहां से कहां तक आप ऐड करना चाहते हैं, x में जो चेंज हो रहा है ना। Yes, sir. 0 to X. अच्छा आप इसमें बताइए मुझे, आप ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी थी u, ये फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। और आप इसमें ये स्मॉल चेंज कर रहे हैं dv 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 dv, तो ये आपका टोटल चेंज कितना आया स्टूडेंट्स, आप टोटल चेंज निकाल रहे हैं एडिंग ऑल दीज चेंजेस, तो ये क्या है आपका V minus U. v माइनस यू। बात आई समझ में? Yes, sir. स्टूडेंट्स आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। अगर सपोज आपका यहाँ dt होता तो मुझे ये बताओ यूनिट्स किसकी लिखोगे आप, लोअर लिमिट अपर लिमिट किसकी लिखोगे बेटा, चेंज कौन हो रहा है यहाँ पर, Time. Sir, time. टाइम मान लो आपका 0 था और यहाँ टाइम है t, ये सारे dt 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 ऐड करने हैं, कहां से कहां तक ऐड करने हैं, Sir, 0 से लेके T तक. तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा ये सबको ऐड करके, Sir, T. ठीक, बस इतनी सी बात है। सबको फार्मूले समझ में आ गए तीनों? Yes, sir. तो स्टूडेंट्स फटाफट कर सकते हैं, अब कोई इशू नहीं है, कंसेप्ट हमारे क्लियर है। चलिए तो यहाँ लिमिट लगाएंगे x 0 से x, और जो वेलोसिटी है वो ये चेंज कौन रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है या टाइम चेंज हो रहा है, Sir, time. तो टाइम को ऐड करेंगे कहां से कहां तक, Sir, 0 से लेके T तक. क्लियर है सबको? तो यहां से क्या आ जाएगा आपका x, X. हाँ,
और स्टूडेंट उसके बाद जो v है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर मे बी कांस्टेंट। नहीं, v जो है बेटा चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं u से v पे पहुंच गए हैं, ये लगातार इस पॉइंट पे भी आप इसको v बोल सकते थे। ये वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सभी में। क्या एक्सेलरेशन है? Constant. लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां से निकलेगी जो आपको पता है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से वैल्यू निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसकी मैं लिमिट लगा दूं अब। v कहां से कहां तक है? v चेंज इन v बेटा सर u to v। u से v पे गए। यस सर। Yes, sir. और यहां पर क्या चीज चेंज हो रही है आपकी? Time. टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है? 0 से T. 0 से T तक. बस अब आप देखिए ये यहां क्या आ जाएगा आपका सेकंड फॉर्मूला, यही चीज है ये। देखिए तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, u से v तक गए हैं आप, तो टोटल वेलोसिटी जो चेंज हुई है सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू, नेट चेंज इन वेलोसिटी। यही तो वेलोसिटी चेंज है आपका। Yes, sir. और a क्या है स्टूडेंट्स? Constant. अब a को आप बाहर लिख सकते हो। ओके, तो चलिए क्या आया स्टूडेंट्स यहां से आपका v। अब ये सारे टाइम को ऐड कर दो, छोटे छोटे टाइम 0 से t तक, तो क्या आ जाएगा? T. सर t at। तो फर्स्ट फार्मूला आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। 80. अब जो सेकंड फार्मूला है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहां मैंने आपको बताया था अगर कांस्टेंट है तो आप उसे बाहर लिख सकते हैं। जो v है, v इज ए फंक्शन ऑफ t। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो अगर वो टाइम पे डिपेंड हो रही है, हमेशा याद रखना, तो इस वेरिएबल की आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। दो बातें आएंगी स्टूडेंट्स। पहली बात, क्या वो कांस्टेंट है? कांस्टेंट है तो बाहर लिख, ओके। और अगर वेरिएबल है तो आपको उसकी वैल्यू चेंज जो चीज हो रही है उसकी टर्म्स में लिखनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नहीं है तो v की वैल्यू रख दीजिए। क्या है v की वैल्यू? u प्लस at 0 to t इंटू dt। सबको ये बात समझ आ गई, याद हो गई? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू, अब आप इसको दोनों के साथ जो है ना ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हो। तो u इंटू डी टी प्लस 0 to t at इंटू डी टी। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो u क्या? इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। देखो फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी चेंज हो रही है, लेकिन इनिशियल तो कांस्टेंट है। उसके बाद जो वेलोसिटी आ रही है वो चेंज है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए इसको कांस्टेंट लिख दिया बाहर। तो 0 to t dt। कोई दिक्कत है? यहां भी एक कांस्टेंट था, बाहर लिख दिया था हमने। ओके, चलो अब ये बताओ, एक कांस्टेंट है, एक को बाहर लिख दूं मैं, और अंदर क्या आ गया? 0 to t इंटू डी टी। क्लियर है? और ये क्या आ गया? x इज इक्वल टू यू इंटू सारे स्मॉल t ऐड करेंगे 0 से t तक, तो टोटल यू टी प्लस यहां क्या आएगा? ये देखिए a इंटू, अब इसको हम t का जो इंटीग्रेशन होता है इसकी ऐड करो और उसी से डिवाइड कर दो, बस एज सिंपल एज दैट। तो इसकी पावर t की पावर 1 थी यहां पर, तो 1 में 1 ऐड किया, 2 आ गया और उसी से डिवाइड कर दिया। लिमिट्स है 0 to t। अब क्या करेंगे? एक बार अपर लिमिट पुट करो यहां पर t की जगह, t स्क्वायर की जगह, तो क्या आएगा आपके पास? a तो वहीं का वहीं है, t स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब एक बार 0 पुट करो t की जगह, तो 0 स्क्वायर अपॉन 2 क्या होगा? 0। यहां से आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब फटाफट थर्ड इक्वेशन भी कर लेते हैं। तो इसी से आगे बढ़ेंगे, यहां पर भी अब इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आप खुद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ। इसके बाद एक बार और लिखेंगे तो आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे। चलिए बताइए इसकी लिमिट्स क्या लगाऊं मैं, चेंज क्या हो रहा है यहां पर? सर वेलोसिटी इज चेंजिंग, कहां से कहां तक? सर U to V, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चेंज हुई? सर 0 to X। बस सीख गए आप। अब अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देना, ठीक है, और वेरिएबल है तो वही। अच्छा अब ये देखिए, ये तो v और dv ही आ गया, जैसे यहां पे t और dt था। तो क्या किया था हमने? सर इंटीग्रेशन V square upon में 2। वेरी गुड, पावर एक ऐड कर दो, समझ रहे, क्योंकि डायरेक्ट इसी का वेरिएबल है, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तीन चीजें होंगी स्टूडेंट्स, पहली चीज कांस्टेंट, दूसरी चीज उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है तो उसकी वैल्यू पुट करो, और तीसरी चीज डायरेक्ट वही लिखा हुआ है। या तो अलग चीजें लिखी होंगी, तो दो चीज हो सकती हैं, कांस्टेंट होगा तो बाहर लिख दो, कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है तो उसको उसकी टर्म्स में लिख दो, और तो इससे वो डायरेक्ट या फिर वो डायरेक्ट लिखा होगा बस, और कोई पॉसिबिलिटी कोई चीज नहीं हो सकती। ओके चलिए अब आप सीख गए बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, लिमिट्स u टू v इज इक्वल टू, चलिए यहां बताइए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 to x dx, और यहां आप पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट v की जगह लिख दीजिए v, तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब एक बार u पुट करेंगे इसकी जगह, तो u स्क्वायर बाय इज इक्वल टू a इंटू, यहां बताइए स्टूडेंट्स, सर A into X, x, तो क्या आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल is equals to 2AX। 2x। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको तीनों इक्वेशन डिराइव हो गई। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी जो है, मतलब जो है इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमने आज ग्राफ से, कैलकुलस से, दोनों से इक्वेशंस को डिराइव किया है। इसको आप बार बार लिखें, 2-3 बार, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, आप वीडियो भी देख सकते हैं एक बार और। ओके चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.